Dear student, welcome back to Dr. Shrikant Pharmacy channel. Please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest pharmacy videos. So today we came with a topic, rotary cutter mill. Rotary cutter mill. It is the one example of the size reduction based on the principle of the cutting. आज आए हैं हम लोग नया टॉपिक के साथ रोटरी कटर मिल. रोटरी कटर मिल, ये जो रोटरी कटर मिल है ना, एक एग्जाम्पल ऑफ द साइज रिडक्शन. प्रिंसिपल बिहाइंड द साइज रिडक्शन इज कटिंग or cutter. Okay, so let we enlighten in this class what are the principle involved in this, what are the construction, how the construction will be taken and working, how it works, and what are the pharmaceutical uses for this rotary cutter mill. Okay, the principle behind the rotary cutter mill is cutting or shearing the feed material with the help of a sharp knives. Okay, what is the principle? Cutting or shearing of the feed material with the help of a sharp knife. मतलब इसका जो प्रिंसिपल रहता है, जो कटिंग प्रोसेस कैसा होता है बोले तो इसके अंदर शार्प नाइफ रहता है. शार्प नाइफ रहता है. जैसे मटेरियल शार्प नाइफ और स्टेशनरी नाइफ दो तरीक़ा का रहता है. जैसे स्टेशनरी नाइफ बोलते हैं, रोटेटिंग नाइफ बोलते हैं. ये दोनों में बीच में जब कौन सा भी मटेरियल आता है, जैसे मटेरियल समझ लीजिए रफ़ और फाइब्रस मटेरियल, प्लांट मटेरियल, एनिमल मटेरियल आता है ना, वो जगह पे बीच में जो रहता है ना, इन बिटवीन आए से वक्त वो कट हो जाता है. उससे क्या होता है? साइज रिडक्शन होता है. इसलिए ये जो प्रिंसिपल बिहाइंड द रोटरी कटर मिल इज अ कटिंग मिल. ओके, कटिंग एज एन ए प्रिंसिपल. कंस्ट्रक्शन. Okay, so mainly it contains the two important part. One we call as a stationary knife and secondly we call as a rotating knives. These are the two important knives will be which is present. As the name indicates, stationary means these knife will be fixed in the milling equipment, whereas rotating knives means it will be rotates inside the milling chamber. So upon the motor connected with the rotating knives, what happen? Rotating knife will be rotates. And secondly, it contains the rotating disc, and this rotating disc will have the capacity to hold the 2 to 12 knives. 2 to 12 knives, and this rotating disc will be rotated, that is 200 to 900 rpm. And another important criteria is the construction is the hopper. This hopper is used for the feeding of the material. Hopper is used for the feeding of material to be size reduced. And this is a milling chamber. So this is a milling chamber, and bottom you will have the screen will be there, and this screen will be have the mesh size 80 to 100 size. And below that the receiver will be there, where the product will be collected for after the size reduced. So this is the construction of the rotary cutter mill. Okay, and any material which is present in this, it will be get down by the milling chamber with the gravitational forces. So now we'll come across as the working, how this works of the rotary cutter mill. And this is very simple. Any material or any like a tough or the fibrous material which has to be size reduced, like a medicinal plants or the plant parts or animal tissues, or soft materials like roots, peels or wood, you want to reduce the size material means you place it in the hopper. Due to the gravitational force, these feed will be entering into the milling chamber, where the two types of knives will be there. One is a stationary knife which will be fixed in the milling chamber, whereas another one rotating knives will be there. This will be rotate along with the rotating disc. So any material which come across us in between the stationary knives as well as the rotatory knives, the material will be cuts with the cutting as a principle with the sheared in between the knives. So thereby what happen, the material will be gets into the bottom of the sieve where it is placed, and when the required size is gets, so the product will be collected in the receiver. So this is very simple, and this milling chamber is a very much important to control the
control the casing part of the this stationary as well as the rotating knives. Due to this casing will be there, the product will not comes out of the this milling chamber. So this is a very simple working of the rotary cutter mill, and this rotary cutter mill will be mainly used in pharmaceutically for the size reduction. Example are the tough and fibrous material. So with this material you can make the size reduced up to the size of the particle around 80 to 100 mesh. The example commonly used for rotary cutter mill are the medicinal plants, plant parts, animal tissues, and more commonly like a soft material, roots, peels and woods. And these are mainly the rotary cutter mill used in the industry for the manufacturing of rubber and plastic items or plastic material, where you required the size reduction of those material. So ये वो रोटरी कटर मिल का जो कंस्ट्रक्शन रहता है वेरी सिंपल रहता है. एक मिलिंग चेम्बर रहता है, उसके अंदर दो नाइफ्स रहता है, एक स्टेशनरी नाइफ, एक रोटेटरी नाइफ. इसके साथ एक रोटेटिंग डिस्क रहता है. ये रोटेटिंग डिस्क के लिए 2 to 12 तक नाइफ्स के लिए अरेंज करने का एक स्पेस रहता है. ये जो रोटेटिंग डिस्क जो रहता है ना, उसको ऑपरेट करे तो रोटेट करे तो 200 to 900 आरपीएम तक तो आप रोटेट कर सकते हैं. और जो भी मटेरियल आपको साइज रिड्यूस करना उसके हॉपर में डालना, हॉपर में डालने के बाद ये अंदर चले जाता है मिलिंग चेम्बर में. यहाँ पे स्टेशनरी नाइफ और रोटेटरी नाइफ्स रहने से क्या हो जाता है, जो भी मटेरियल रहता है इन बिटवीन में आ जाता है, उसका साइज कट हो जाता है. आपको जितना साइज चाहिए उतना साइज इन बिटवीन स्टेशनरी एंड रोटेटिंग नाइफ्स यू कैन एडजस्ट इट. साइज वो भी रिड्यूस हो जाता है ना, वो बीच में बॉटम में आ जाता है, नीचे आ जाता है. नीचे जो रहता है सीव रहता है विच कंटेन द 80 to 100 मेश का स्क्रीन रहता है. जैसे प्रोडक्ट नीचे आ जाता है, प्रोडक्ट रिसीवर में प्रोडक्ट लेते हैं. सो बहुत सरल, बहुत ईजी इक्विपमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर द इन फार्मास्यूटिकल फील्ड. सो दिस rotary cutter mill majorly used in the industry for the tough and rough materials, and also medicinal plant parts, animal tissue, roots, peels and woods, and majorly will be used for the manufacturing of rubber and plastic material. आपको ये क्लास से बहुत सरल से रोटरी कटर मिल में क्या रहता है, कैसा रहता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका वर्किंग क्या है, उसका यूजेस क्या है, सरल से आपको समझ में आया. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.